we all need to reach that point जहाँ पे हम हर रोज लाइफ courageously जी सकें. You know, where we are so bold, we have so much of faith in ourselves, we have the faith in divine and existence, you know, that we can live life, you know, courageously. So बात ये है कि like normal average person में courage भी है और fear भी है. Fear is, if you ask me, it is like, you know, cultivated by the society to control the person. कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, मत करो, या ये नहीं किया तो ये हो जाएगा इसलिए करो. तो fear is cultivated like that. Yeah. But, and again, see, because society really operates a lot of, you know, I mean, its operating mechanism is controlling, and controlling में तो fear का बहुत बड़ा role होता है. But this fear sort of makes people, you know, not realize what strength they have or what they are capable of. भाई जब कोई डर जाएगा वो कैसे उसको पता चलेगा ना कि उसमें कितनी strength है. You know, so we all need to find ways to sort of deal with this fear, to overcome it, and to sort of find that constant strength and faith in us. तो ये हम सबको वो बैलेंस एम कर भी रहे हैं, तो वो वी हैव टू लोकेट दैट स्ट्रेंथ. हाँ, मतलब अल्टीमेट गोल स्ट्रेंथ ही है, अल्टीमेट गोल डर नहीं है. ट्रू. अल्टीमेट गोल स्ट्रेंथ है. ये ध्यान रखिए. एंड आई वुड से इट्स अ जर्नी. मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई हम बहुत एक दिन में सुपर हीरो नहीं बन सकते. इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर फियर टुडे, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट टुडे, इफ यू स्टार्ट वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन इट, इट विल टेक यू like a long passage of time. Yeah, true. But have that vision in front of you, that this is what is the vision. So visualizing is also one of the important key. Absolutely. You know, here I would again quote the mother. वो ये कहती थी कि even if your reality is very dark, depressing, very gloomy, just जैसे वो बच्चों की fantasy stories की books होती है ना, तो she used to say that every day take out few moments, you know, where you can close your eyes and where you can visualize a better future, where you can make a beautiful painting of a better life. कि अगर आज मैं ऐसा हूँ, that's okay, but मुझे कैसी life चाहिए? What all things do I need there? You know, to visualize that better future, to put your heart and soul into it, you know, is very important. Because जब हम visualize करेंगे, जब हम उसको सोचेंगे, तभी हम उसको manifest कर पाएंगे. True. We need to dream. And we need to dream really with a lot of strength. Only then that dream will turn into reality.